Welcome to this first lecture, Introduction to Nanoscience and Technology. In this lecture, actually we are going to discuss some fundamental and basics of this course. इसमें सबसे पहले हमने आज के लेक्चर में देखना है कि नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है और नैनो टेक्नोलॉजी इन पास्ट एंड प्रेजेंट में कुछ इसके बारे में चीज़ें डिस्कस करनी है कि इसका स्टार्ट कैसे हुआ और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कब से हमने रियलाइज़ करना शुरू किया और सम बेसिक टर्म्स इन नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो साइंस में जो यूज़ होती हैं जिससे स्टूडेंट्स को फेमिलियर होना चाहिए। और लास्ट में कुछ रिप्रेजेंटेटिव एप्लीकेशंस हैं। इन एप्लीकेशन की डिटेल्स हम बाद में देखेंगे, अभी जस्ट उसको एक हम ओवरऑल गो थ्रू इसकी कर रहे हैं। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि नैनो साइंस एक्चुअली दिस इज वन ऑफ फील्ड इन विच वी इन्वेस्टिगेट और स्टडी and manipulate and engineer matter, particles and structures on nanometer scale। और ये नैनोमीटर जो स्केल है ये आमतौर पर इसमें एटम या मॉलिक्यूल मोस्टली जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। सो अब इस चीज़ में दो यहाँ चीज़ें हैं। मैनिपुलेशन से मुराद ये कि हम अपनी मर्ज़ी के साथ उनको जो है बना सकते हैं, उनके मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी। इसमें हमारी जो विल है, हमारा जो रिक्वायरमेंट है या एंड यूज़र जो एप्लीकेशन है वो हम खुद डिज़ाइन कर सकते हैं और इंजीनियरिंग ऑब्वियसली उसी का एक हिस्सा आता है। सो ब्रॉडली स्पीकिंग नैनो साइंस इज एक्चुअली इट इज़ वेरी वेरी वास्ट फील्ड। और इस फील्ड में अब बेसिकली जो भी हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उन स्ट्रक्चर्स को आमतौर पर हम नैनो मटेरियल्स कहते हैं और उनकी जो इलेक्ट्रिकल है, ऑप्टिकल है, थर्मल या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी हद तक बल्क से जो है वो मुख्तलिफ होती हैं। सो नैनो स्केल पे ये सारी जो चीज़ें, ये प्रॉपर्टीज़ जो एक जिनको हम कहते हैं कि न्यू प्रॉपर्टीज़ इवॉल्व होती हैं, उसके पीछे जो एक फिनोमेना है या जो प्रोसेस है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है और उस प्रोसेस या उस फिनोमेना को हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ जैसे उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, वो है क्वांटम मैकेनिकल इफ़ेक्ट्स कहते हैं या क्वांटम साइज इफ़ेक्ट कहते हैं। दिस इज़ एक्चुअली द टर्म द फिज़िक्स पीपल जो है मोस्टली इसको यूज़ करते हैं। नाउ कमिंग टू द नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस बेसिकली जो है वो एक फील्ड ऑफ स्टडी है, साइंस है, जैसे केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है और मैथमेटिक्स है। बट नैनो टेक्नोलॉजी एज द नेम इंडिकेट्स कि इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द नैनो मटेरियल ऑन द प्रैक्टिकल डिवाइसेस। So the nanotechnology is the application of nanoscience leading to use of new nanomaterials and nano-sized component in useful products. So it is hoped that nanotechnology will eventually provide us with the ability to design custom-made materials and product with new enhanced properties, जिसको हम नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, स्मार्ट मेडिसिन, सेंसर्स, और ये सारे के सारे जो हैं ये नैनो टेक्नोलॉजी का हिस्सा हैं। सो जो नैनो टेक्नोलॉजी है या नैनो साइंस है बेसिकली इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड एंड एक्चुअली it is why it's a multidisciplinary field, because it lies at the interface between physics, chemistry, materials science, microelectronics, biochemistry and biotechnology. So whoever is going to work in nanomaterials or in nano science, in fact he can be from physics background, can be from केमिस्ट्री बैकग्राउंड, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो सकता है, बायोकेमिस्ट हो सकता है, इवन फार्मासिस्ट हो सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो सकता है। एवरीवन कैन वर्क प्रोवाइडेड कि वो
इसके जो बेसिक्स रूल्स हैं उनको वो फॉलो करें। और whenever you people work, yeah, anybody work in this area, so obviously he should have the knowledge of little bit of every field. As a chemist, you are studying as a chemist, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपको केमिस्ट्री पता होना चाहिए, आपको उसका फिजिक्स बैकग्राउंड पता होना चाहिए, आपको उसका मटेरियल साइंस के एक्सपेक्ट पता होना चाहिए प्रॉपर्टी, सो देन यू विल बी एबल टू डिज़ाइन इन अ बेटर वे न्यू एंड गुड प्रोडक्ट्स। यूएस का जो नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव प्रोग्राम है, which started in early 2000, so उसने जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसकी दी हुई है वो है कि नैनो टेक्नोलॉजी इज़ एक्चुअली द अंडरस्टैंडिंग एंड द कंट्रोल ऑफ मैटर at dimensions of roughly 1 to 100 nanometers. Why? Because at this scale range, some unique properties or phenomena arise, and these unique property or phenomena are actually responsible for novel applications. So that's actually the proper definition of nanotechnology. It is the study of the nanomaterials. And what are the nanomaterials? Any particle whose dimension से मुराद है कि उसकी लेंथ, उसकी हाइट, उसकी विड्थ, इन तीनों में से कोई एक या तीनों अगर नैनोमीटर स्केल में है, उसका साइज जो है इस रेंज में है, सो दैट इज एक्चुअली द नैनो material. And itself we know that nano prefix it means, because it is a Greek word, it means very very small, dwarf जिसका मतलब है, और when we talk in technical word, 1 nanometer जो है actually 1 billionth of a meter है. So mathematically 1 over, you can see there are 9 0 digits, 100, so 10 is power 9 meter. So this is actually the scale on which the particles, whichever the particle exist, we say they are the nano particles. And the nanometer scale itself, because हमारी डेली लाइफ में हमारे पास जो लेंथ ऑफ स्केल है, कुछ चीज़ें हमें सेंटीमीटर में उनका साइज़ है, कुछ मिलीमीटर में है, कुछ माइक्रोन में है, कुछ नैनो में है, तो ये हमारे पास जो आमतौर पर नैनोमीटर तक स्केल है, इसकी ये लेंथ में डिफरेंट जो चीज़ें हैं, ब्लड सेल्स हैं, जैसे रेन ड्रॉप है, पेनी, ये दिए गए हैं। अब जो सेंटीमीटर या मिलीमीटर में है, इनको हमारी जो आई है वो लाइट रेडिएशन की मौजूदगी में सनलाइट से, या जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है या सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये जो नॉर्मल लेंस होता है, उससे हम इनको देख सकते हैं। बट जो माइक्रोन साइज़ या उससे नीचे भी चीज़ें हैं, उनके लिए हमें देखने के लिए, जैसे रेड ब्लड सेल्स है, वी नीड स्पेशल microscopic techniques. So actually this is the area, this is the main thing. ये जो area है, ये जो scale range है, this is known as the magical scale. And why? Because at this scale the nanoparticles, the nanostructures, they they generate some very unique properties, and those properties actually then they are very different as compared to this scale. जैसे गोल्ड नैनो पार्टिकल है फॉर एग्जांपल, तो गोल्ड नैनो पार्टिकल जब हम इस रेंज में वो पार्टिकल बनाएंगे तो दे वो लुक लाइक, उनका कलर जो है वो रूबी कलर या जिसको रेड कलर कहते हैं वो हो सकता है, लेकिन हमें पता है जो सेंटीमीटर्स के होगा तो उसका कलर जो है वो येलोइश शाइनी होगा। इसी तरीके से उसकी कंडक्टिविटी डिफरेंट करती है इस स्केल में और इस स्केल में। इसी तरीके से उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, सो दे ऑल चेंज, तब्दील हो जाती हैं। अब ये तब्दील क्यों होती हैं और इसके पीछे क्या प्रोसेसेस हैं, वी विल डिस्कस दिस इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। अनदर एग्जांपल के द नैनो
scale जो है things हैं, although they are very small, but it does not mean that they are inefficient. टेक द एग्जांपल ऑफ द क्रोमोसोम, इसका एक बीट है, ये इसका साइज़ तकरीबन जो ब्लॉक है वो नैनोमीटर में है, लेकिन ये इस साइज़ होने के बावजूद इट इज़ सो एफिशिएंट कि इट in fact controlled all the activities of the cell, tissue, organs, organelles, and overall, or animals, yeah, whatever it may be the subject. So this is very important, that nanoscale is a magical scale because all the life governing processes actually they are happening at this scale. Even glycolysis, electron transport chain, whatever you name it, वो सारे के सारे इसी स्केल रेंज में होते हैं. The best example, I think you have heard about mitochondria. It's again the nano structures, and that's regarded as the powerhouse of the cell. The next, a little bit of historical perspectives, the modern sciences, the Richard Feynman, basically, they it is regarded that he is actually the forefather of this thing. Although we know that this is not true, but because he is American, you know, the American literature and American everything is dominant all around the world. So he proposed a theoretical lecture. In his theoretical lecture, there is a plenty of room at the bottom कि हम मैटर को अपनी मर्ज़ी के साथ इसको कंट्रोल कर सकते हैं. इन 1957 में उसने ये एक टॉक दी थी जिसमें बेसिकली इसका आइडिया ये था कि हम एक टाइम ऐसा आने वाला है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स की मदद से हम मशीन्स बनाएंगे, छोटी छोटी मशीन डिवाइसेस बनाएंगे, एंड दोज डिवाइसेस मशीन्स दे विल बी सो पावरफुल, सो स्ट्रॉन्ग दैट दे कैन ओवरटेक द many other things which we are using now. So obviously उसका ये theoretical aspect था, but he didn't use the word nanotechnology. Actually the nanotechnology word later on in 1972 Japanese ने इसको term को use किया था. So contrary to this argument, we know that in history this is a Lacracus cup जो कि रोमन आर्टिफैक्ट के मुख्तलिफ टाइप्स के इस टाइप के आपको मिलेंगे म्यूज़ियम में. सो अगर आप रात के वक्त जाते हैं या दिन के टाइम आपको इनको आपको देखेंगे, और अगर आप इनके ऊपर टार्च की लाइट या जो सनलाइट अगर आप इनके पड़ती है तो ये देखेंगे कि वो कलर एकदम चेंज हो जाता है, रेड हो जाता है, कोई ग्रीन हो जाता है. सो दैट्स चेंज इन कलर इज ड्यू टू the particles, the nanoparticles at that time the people have used. So it is very oldest technology, it's not the new one, but the people of that era and even later on they didn't know that this is the nanotechnology. इसी तरीके से चर्च की विंडो है, स्टेन ग्लासेस, ये भी जब लाइट पड़ती है तो उसके कलर रात के टाइम उस दौर में ये जब लाइट को लाइट अप किया जाता था तो इससे डिफरेंट कलर्स आते थे. तो ये अगेन इट्स गिव सॉर्ट ऑफ देयर स्पिरिचुअल, उनको इससे एक satisfaction मिलती थी. So these colors again they arise due to the Cornish metal nanoparticles they were using in these glasses बनाने में इस्तेमाल करते थे. And briefly there are two methods of nanomaterial synthesis: bottom up, which is a chemist approach, and in this way, in bottom up approach we prepare the nanoparticles using the atoms, ions and molecules from bottom. And there's a different sonochemical, thermal, photochemical reduction techniques, electrochemical templating, lithography. So these are our different techniques which we use in bottom up approach. In the other technique is a top down, in which actually we have a material and we grind it, we cut it, we force it. और top down method, अब ये कट और फोर्स के लिए हमें ज़ाहिर है या तो हमें बाल माइनिंग यूज़ करनी है या हमें कोई स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट लाइक लेज़र, इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करना है, वट एवर इट मे बी. when we using that one और मटेरियल हम वो बनाते हैं नैनोमीटर साइज़ का, तो उसको हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं. regarding their method, which is better one, generally bottom up approach is more considered as a low cost, good, green, environmental friendly,
and better quality nanomaterials production. These are the common terminology जो nano material technology में use होती है, जैसे single wall nanotubes, graphene sheets. So these are all different जो नाम हैं, graphene, carbon. So they are very familiar, but remember they are the nanoscale materials. तो इसलिए ये हम nano materials इनको भी हम कहते हैं. फिर नैनो पार्टिकल्स एक अनदर टर्म है, स्पेशली यूज़ होती है, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं. So nanoparticles are actually basically those particles whose size is 1 to 100 nanometer range. And the nanocapsules, the name indicates they are formed in a form of capsules, and within the cavity of the capsules there are specially implanted medicinal vaccine drugs or different type of antigens, antibodies, and when these are they are injected in a living organism. So what happens, the capsule outer filling, it get dissolved, and the material in this way they released. तो मोस्टली जो है ये जो कैप्सूल बनाए जाते हैं ये पॉलीमर मटेरियल्स के बनाए जाते हैं, जो कि इस्तेमाल होते हैं आगे मेडिसिन कैरी करने के लिए. नैनो क्रिस्टल्स अनदर टर्म भी ज़्यादा यूज़ होती है. और दिस एक्चुअली इफ़ यू लुक एट दिस इज़ अ सिंगल मटेरियल कैडमियम सेलेनाइड, और कैडमियम सेलेनाइड इटसेल्फ से हमारे पास रेड और ये सारी स्केल तक जा रही है. So these are capable of all producing different colors. So depending on the size, they produce different color. कुछ जो है वो red देते हैं, green देते हैं. So in this way we can completely we can make रेनबो ऑफ द थिंग्स. एक सिंगल मटेरियल से हम 5, 6, 7 कलर बना सकते हैं, और इस मटेरियल कलर को हम इस्तेमाल करके वी कैन यूज़ इन लिक्विड के स्क्रीन बना सकते हैं, कलर स्क्रीन बना सकते हैं, न्यून साइन बना सकते हैं, एंड इवन जो ग्लास हैं डिफरेंट कलर्स के वो बना सकते हैं. डेंड्रामर्स दे आर अगेन very complex and large molecules, and they actually contains very so mostly they are the 3 dimensionals. So the purpose of them that they mostly have specific function. They carry the active ingredient of the medicine to the different sites in the body. So this is again very hot area जो कि nano materials में इस्तेमाल हो रहा है. And the present scenario why we are interested in the nanomaterials या nanotechnology and nanoscience में, because generally we have facing a variety of challenges. Of course alternative fuels का challenge है, cheap and raw materials हमें चाहिए, हमें रिड्यूसिंग हार्मफुल बाई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, क्लीन इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, ग्लोबल वार्मिंग को डील करना है, और इसी तरीके से इन्फेक्शियस एजेंट्स इनको प्रिवेंट करना है. सो दीज आर डिफरेंट चैलेंजेस. वी कैन एड्रेस दीज चैलेंजेस ईजिली बाय द यूज़ ऑफ नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी. So in this diagram you will find that of course all the fields, chemistry to medicine, they overlap with the nanotechnology. So we can use them in all different these fields. And how? This is a best example कि हम ऐसे कपड़े बनाएं, ऐसे क्लॉथ्स बनाएं जो कि नॉन स्टेन हो, जिनके ऊपर स्टेन कोई कलर ना जम जाए, और या इस तरीके से नॉन वेटिंग हो, जिनके ऊपर पानी अगर उनके ऊपर फॉल करता है वाटर रेन ड्रॉप तो वेट ना हो. दिस टाइप ऑफ क्लोथिंग आर बेसिकली यूज इन सच एरियाज लाइक ग्लेशियर्स में या आगे पीछे जहाँ पे रेनी सीज़न है और आर्मी या इस सिक्योरिटी लोगों के लिए ज़रूरी होता है. सो वी यूजिंग द नैनो टेक्नोलॉजी टूल वी कैन फैब्रिकेट दिस टाइप ऑफ dressing suits. Similarly, high-rising buildings, they are very common in the around the globes. The problem with the high-rising building is their cleaning and the environmental effects. Over the period of time इनकी जो सरफेस है डिटोरिएट हो जाती है, डिफरेंट पोल्यूशंस एजेंट इसके सरफेस के ऊपर, और जो पेंटिंग वगैरह या जो भी कलर होता है वो भी इतना ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता. सो यूजिंग द नैनो पार्टिकल्स and nanotechnology tool, the people they are creating in fact such a paint, such a enamel that they when they are coated on the external surface of these buildings
तो वो जो पार्टिकल पेंट के अंदर एम्बेडेड होते हैं, वो क्या करते हैं कि सनलाइट को कैप्चर करके जो भी उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल है और दूसरी जो चीज़ें हैं या पोल्यूशन से रिलेटेड है उनको डिग्रेड करते हैं और इस तरीके से उसकी सरफेस क्लीन रहती है. So this is very very interesting and very very attractive approach, especially used in the Western countries. Similarly, the nano solar cells, very small solar cells, which are very very high efficient, so they can be fabricated और फिर इनको उसी तरीके से घरों के ऊपर से कपड़ों में आप इनको एम्बेड कर दें एंड देन दे जनरेट एनर्जी एंड दैट एनर्जी स्टोर्स इन बैटरीज और बैटरी से फिर उसको आप चार्जिंग पे और डिफरेंट जो मोबाइल फ़ोन है स्मार्टफोन उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. Nano sunscreens, this is another thing, and that is actually that UV radiation when fall on the human skins, they can cause cancer. So if we use जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स और टाइटेनियम डाइऑक्साइड पार्टिकल ऐसी क्रीम उससे एनामल बनाएं और उस क्रीम या पेस्ट को अगर हम चेहरे पे या हाथ पे लगा दें तो यूवी लाइट दोनों जो हैं 190 और 360 जो भी इसकी वेवलेंथ है व्हेन इट फॉल्स सो इट विल बी ट्रैप्ड बाय दोज पार्टिकल्स बिकॉज दोज पार्टिकल्स जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड दे हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब. क्यों एब्जॉर्ब करते हैं ये हम बाद में देखेंगे और इस एब्जॉर्प्शन के बेस पे उनका क्या होता है जो स्किन नीचे है वो डैमेज नहीं हो सकती. सो दिस इज़ वेरी पॉपुलर in especially sports and the people who are very very eager to watch cricket and football, and when there is a very huge index of UV around the stadium, so people use this type of, and even the people who goes on the holidays और फिर वो सन बाथ में भी उसको जब इसको इस्तेमाल करते हैं. So cutting brief, it's an emerging interdisciplinary science which integrates chemistry, physics, biology, and all the other fields, computer science, and it is very very interesting field. In this field we can collect the data and manipulate particle at a very small scale. So this scale is actually very very interesting. It's a new area of the research, and we can even address a lot of problems which the humanity is facing in terms of healthcare, energy, and environmental and technology. And lastly, these are the references, and thank you for watching. See you next video. Thank you.